Hey guys, welcome back. Expectations थे 2-0 win के, but we'll have to settle with 1-0. But overall, still more positives than negatives. हमने discuss किया था कि इस सीरीज से गेन तो ज्यादा करने था नहीं, but बहुत कुछ गवाया जा सकता था. But I think the key players that needed to step up stepped up and stepped up very well. So let's start with the positives. I think Jaiswal was one, left-hander, top of the order, और he took his chance with both hands. क्या लगता है जायसवाल and Rohit as well, to be honest. क्लास यार जायसवाल तो आई थिंक ही इज लंबी रेस का घोड़ा है। वो गिल जैसा लगा मेरे को उसका। रिस्पॉन्सिबल भी था इनिशियली, टुक हिज टाइम, फिर अटैक में भी हिचकिचाया नहीं, और कॉन्फिडेंस एक है उसके, एक हम्म. कॉन्फिडेंट ऑरा है उस बंदे का। तो आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड विद उसका अप्रोच भी। नॉट ओनली द फैक्ट दैट ही स्कोर्ड अ बिग सेंचुरी, सेंचुरी तो सबने मारी है वेस्ट इंडीज के सामने ऑन डेब्यू, रोहित ने भी मारी है, फिर आई थिंक एक दो और थे, अश्विन ने भी इतनी तो सारी मारी, शॉ शॉ ने भी दो मारी है। बट दे आर नोवेयर टू बी फाउंड, राइट? शॉ तो है ही नहीं कहीं नजदीक। इवन रोहित टुक 5-6 years after that West Indies knock to actually cement his place, but rather than the knock itself, the approach was impressive. Opening था and West Indies में था, although कुछ खास अटैक था नहीं bowling, but नहीं, still. I actually think the West Indies bowling attack is quite good because if you look at it, Roach has 400 international wickets. Holder we But know, मतलब वही I think वो लोग अपना पिच ठीक से यूज नहीं किया ये सीरीज में. correct, and also Gabriel आया second match में, he looked sharp. Otherwise they were हम्म. all like 125 वाले. Joseph was little bit quick, हाँ. but हाँ. see, my thing is versus pace. आप ऑस्ट्रेलिया में जाके कमिंस के सामने क्या करोगे? दैट इज द क्वेश्चन, राइट? हम्म. इंडिया में तो ठीक है, फ्लैट पिच बनेगा तो रन्स तो आएंगे, दैट वी ऑल नो, इवन वेस्ट इंडीज में भी। बट या आई थिंक he played the game he got, and he took his chance with both hands, so Yeah. kudos to him. Exactly. Yes, I was also very impressed क्योंकि ऐसा टाइम था जब रन्स नहीं आ रहे थे क्योंकि द पिच वाज डेड. तो ऐसा ऐसा नहीं था कि तुम हिट आउट कर सकते हो ये पिचेस पे. Correct, correct. तो ही हैड टू लाइक टेक हिज टाइम. स्ट्रगल करना पड़ रहा था रन्स के लिए भी, रन्स विकेट्स दोनों के लिए. तो आई लाइक दैट ही डिडंट लाइक 100 होने के बाद भी वो ये नहीं था कि वो 100 अब बस हो गया. वो क्या बोलते हैं, जब रन्स 100 के बाद भी जब रन्स आना बंद हो गए थे तब ही टुक हिज टाइम एंड देन ही अगेन switched on when required and scored those runs. So I think that was brilliant. And even Rohit kept attacking. I think in all three innings, he was brilliant. क्या बोलते हैं? We discussed that even for him, captaincy related and all those things. But with the bat, he was outstanding again. He's a class act. I mean, we criticize him for his captaincy, lackluster, sometimes lazy approach, or at least what looks lazy, but he's a class act, right? We all know वो बैठ गया एक दिन तो फिर खत्म ही करके हाँ. आएगा, वैसा हो गया। एग्जैक्टली वो एक बार ही इज प्रोबेबली द ओनली वन फ्रॉम आवर टीम जो एक बार सेट हो गया था फिर वो सिर्फ खुद ही आउट हो सकता है. मतलब ऐसा फिर तुम बॉलर चाहे कोई भी लाओ, चाहे वो स्पिन इधर उधर हो रहा हो या स्विंग सीम, उससे उसको फिर बाद में फर्क नहीं पड़ता. वो खुद अगर कुछ Correct. गलती, फुल शॉट मारने या कुछ मस्ती करने जाता है तो और आउट हुआ तो आउट हुआ, बस उसके अलावा और कुछ नहीं. और प्लस उसने मीम वर्दी कंटेंट भी दिया, वर्ल्ड क्लास. तो उसके लिए भी उसको मानना पड़ेगा. वो तो देता ही है, वो तो उसका पर्सनालिटी ही मीम वर्दी है। हाँ. हाँ। तो नेक्स्ट, मुकेश कुमार का इंक्लूजन के बारे में तुझे क्या लगता है? यार मैंने उसका कभी डोमेस्टिक में उतना फॉलो नहीं किया, पर आई लाइक व्हाट आई सॉ। डिसेंट पेस है, उतना पेस नहीं है पर डिसेंट बॉलर है। अनदर आई वुड हैव गॉन फॉर सैनी, समवन विद एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा. I mean, I would have preferred to see Saini, not gone for Saini, but हाँ. uh, because I think India का pace attacks lacks that 145 bowler, right? Now I think Prasidh is also getting fit, so I would love to have him in the 11 when we I go don't to know if South he's Africa. that 145 तो नहीं है वो हाँ, भी। 140 तो डालता है एंड वो एक्स्ट्रा तो हाइट ना. सिराज भी डालता ही है। सिराज was very हम्म. impressive, हम्म. obviously, but नहीं, बट I'm एक्स्ट्रा talking हाइट. about the enforcer, like हाँ. Mark Wood level, तो हाँ. do something like that. बट आई वुड स्टिल पिक प्रसिद्ध बिकॉज तू साउथ अफ्रीका में जब हम लास्ट टाइम भी जब हम टूर किए थे तो ऐसा नहीं था कि यार बॉलिंग अटैक वाज वीकर देन देम, बट वो जो एक्स्ट्रा बाउंस था उसके वजह से देयर बॉलर्स एक्सट्रैक्टेड मोर.
तो हमारे पास सब ऐसा चिंटू है, बुमराह, शमी, सिराज, these three will probably, और शार्दुल। Yeah, Prasidh तो is a good उस replacement हिसाब for से Ishant, I think. हाँ, तो लाइक मॉर्ने मार्कल जैसा बिल्डिंग से आ रहा है बॉल ऐसा लगता था, तो वो एक्स्ट्रा बाउंस कभी कभी वो एक क्या बोलते हैं थोड़ा डिफरेंट प्रोवाइड करता है अपने बॉलिंग अटैक Correct, को। correct. तो आई Variety थिंक अच्छा है. दैट थोड़ा उसको अगर ग्रूम किया हम लोग, तो क्योंकि ईशांत के बाद आई लंबा तो अभी मुकेश कुमार लंबा है, बट आई सॉ हिज पेस वाज अराउंड 132 135 अगेन, मे बी एक दो स्पेल में शायद गया होगा ऊपर, बट कंसिस्टेंटली हाँ, यू नीड he was 140। like largely like बाकी सब normal हाँ average. बुरा नहीं एग्जैक्टली था, but कुछ ऐसा हाँ X factor भी नहीं था, right? एग्जैक्टली तो उस The हिसाब से thing I आई वुड was concerned with was Unadkat. क्यों? Just नहीं because lefty. उनटकट वाज द बैकअप थर्ड सीमर सिंस बांग्लादेश टूर, I सो वहां understand, पे तुम but नहीं, उनदकत में बट आप क्या देख रहे हो? क्या देख रहे हो? टेस्ट मैच में आई थिंक ही इज गुड, मतलब रणजी वगैरह में तो क्या he बात has कर रहे हैं? earned his stripes to be there, that I agree, बट वही है 125 पे तुम्हारा। वो डाल रहा है बॉल. हाँ मेरे को आई डोंट नो, मेरे को वो स्पीड वाले बॉलर्स अभी मेरे को लगता है कि अगर ठीक है न्यू बॉल है, 5 ओवर स्विंग हुआ, 10 ओवर स्विंग हुआ, 20 ओवर स्विंग हुआ, फिर दे आर यूजलेस एक्चुअली, हम्म राइट? हाँ मतलब वही, नहीं वो तो फिर कंसिस्टेंसी तो पता नहीं, हमें तो सिलेक्शन में तो दिखता है नहीं, क्योंकि अगर करेक्ट, तुम्हारा करेक्ट. थर्ड चॉइस सीमर तुम बांग्लादेश से खिला रहे हो करके तुम यहाँ ला रहे हो, तो वैसा तो तुम्हारा नंबर इट्स 5 भी लाइक रिवॉर्डिंग, हाँ, नाम का रिवॉर्ड नंबर, दिया कि बांग्लादेश खिला लिया, वेस्ट इंडीज खिला लिया, जा और हाँ साल रणजी खेल के रिटायर हो जाए, ऐसा है. मतलब अभी आई डोंट सी हिम इन द साउथ अफ्रीका स्क्वाड इफ आई डोंट सी बुमराह, हिम. शमी एंड ऑल ऑफ देम आर फिट। तो करेक्ट, करेक्ट. अब पता नहीं, मतलब ठीक है, फेयर इनफ दैट he deserves to get the He came chances in that he because gets। purely because he was a lefty. Hmm. Variety के नाम पे he came in. And I Ashdeep and all were in the T20 mode at that time and all those things, so he correct, got in। correct. And so they Uh, have created the system, right? They have to reward good performing Ranji bowlers. But in Ranji, if you have noticed, over the last 5 years, India has produced super green wickets. hmm, I think it was Harbhajan Singh who said 2 years ago कि इधर 125 पे लोग आके कटली एमरोज समझ रहे खुद को because तुम super green wickets बना रहे हो, hmm. because you want to apparently groom people for England. But then फिर जब तुम इंटरनेशनल खेलते हो तो तुम अल्ट्रा प्रो बांग्लादेश वाली पिचेस बनाते हो. But that's a topic for a different day. नहीं वो तो है, but I still thought Mukesh Kumar, whatever I saw of him, it's good to have more options obviously। Correct, correct. Even Ishan Kishan for that matter। I enjoyed the last हाँ inning. It was very nice. हाँ एग्जैक्टली, सॉर्ट ऑफ पंच सॉर्ट ऑफ रोल, तो वो भी एक पॉजिटिव था, एंड ऑफ कोर्स कोहली, वेरी वो गुड तो वेरी गुड। कम टू दैट क्योंकि फिर तू बोलेगा 10 मिनट पर. इसीलिए मैं एंड तक ला रहा हूँ ताकि अब पर बाकी ईशान किशन को देख के आई एम वेरी annoyed कि why he didn't play the WTC final. He could have been a he could have been the difference. फर्स्ट इनिंग्स में वो 25 30 40 रन पॉजिटिव रन, यू नेवर नो, राइट? इट कुड हैव फ्लिप्ड. केएस भरत के साथ अपने को पता है कि 20 रन आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा, राइट? या सो आई थिंक मतलब दैट वाज अ ब्लंडर. लेफ्ट राइट भी अच्छा हो जाता था, बट वही वहां पे भी अगेन they wanted to be consistent with their selections in one तो फिर area क्यों in क्यों ड्रॉप कर दिया? another अभी क्यों area। ड्रॉप कर दिया? हाँ एग्जैक्ट वही बोल रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में क्योंकि भरत को खिलाया तो इसीलिए WTC फाइनल भी भरत। That's what, there's no consistency there's no logic behind certain things, because then रहाणे कहाँ से आ गया, so अभी that's what would you do with Rahane? He scored 20 runs in 2 test matches technically, right? What maybe would you even do? lesser, हाँ maybe 20, Less than yeah। 20. Hmm. Yeah, now I think since you have played him here, you will He's your vice play. captain. So I think now once Bumrah comes back, Bumrah will take over the vice captaincy, and Rahane will be again playing for a spot again, which I think, to be honest, in the first place, there was no need to like name a vice captain if they did not have anyone in mind. Because vice cap, you have Kohli, you could have even named Jadeja vice captain or Ashwin vice captain, who are like proper your। जडेजा तो हर जगह खेलता भी है, ऐसा नहीं कि अश्विन है तो ठीक है, पता नहीं यहाँ उधर साउथ अफ्रीका में खेलेगा क्या क्या नहीं करके। जडेजा तो श्योर शॉट ही इज प्लेइंग, he can play as a batter, he can play as a bowler, or if you want to groom someone you could even give Gill the vice captaincy,
क्योंकि वाइस करेक्ट कैप्टनसी करेक्ट, का ऐसा कोई बड़ा रोल नहीं है, और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कोई कि रोल नहीं टेक्निकली, WTC में यू डिडंट, आई डोंट थिंक दे नेम्ड अ वाइस के प्रॉपर वाइस कैप्टन फॉर द WTC। नहीं था, सिर्फ हाँ कैप्टन एग्जैक्टली। सो तुम कोहली को, दैट मीन्स यू हैड दैट, क्योंकि बिकॉज इट वाज अ वन ऑफ, यू हैड कोहली एज योर बैकअप इन केस रोहित को कुछ हो, तो यू कुड हैव कंटिन्यूड विद दिस टिल यू हैड प्रॉपर ऑप्शंस। ऐसा हम लोग कोई क्या बोलते हैं, कोई दंगल नहीं ये करता कि ओ वाइस कैप्टन नहीं है अब क्या होगा टीम का। सबको मालूम ही है कि व्हेन यू हैव एक्सपीरियंस प्लेयर्स लाइक रहाणे, कोहली, अश्विन, जडेजा एंड ऑल दोस गाइस, यू हैव क्या बोलते हैं, अगर रोहित ऑफ द फील्ड गया तो यू हैव इनफ एक्सपीरियंस इन द टैंक टू फॉर समवन टू स्टेप अप। तुम ऐसा किसी को ला रहे हो जिसको तुमने एक साल ड्रॉप किया साइड से, एक टेस्ट खिलाया, और तुम सीधा वाइस कैप्टनसी दे रहे हो। वो भी नसीब का है ना, दैट्स व्हाट वी सेड इन द लास्ट वीडियो, 17 पे वो कैच आउट हो जाता अगर, या वो तो नो बॉल हाँ नहीं, बोल्ड होता जब बोल्ड एग्जैक्टली हुआ exactly. फिर। कमिंस का पैर अगर वही, ही वाज लकी, ही टुक हिज अपॉर्चुनिटी विद बोथ हैंड्स, ही डिड व्हाट ही कुड, but it's mainly the selection committee and the team management who should be at fault here, आई not थिंक Rahane. रहाणे मे बी दे आर थिंकिंग कि ठीक है और 2 साल खिलाएंगे नो मैटर व्हाट, देन दैट्स स्टिल अ बेटर अप्रोच देन नॉट नोइंग कि ये हर हाँ बार वो स्पॉट के लिए खेल रहा है, इट्स वियर्ड। exactly, South Africa, because I think that Bumrah and Pant are both ahead of Rahane in terms of vice captaincy at least. So what, I don't know what happens once they come back. Bumrah is probably the closest to the to returning to the side. So yeah, let's see. It's a tricky one. Any other positives? बोल ले चल तू, हो जा शुरू। नहीं मैं तो, नहीं मेरे को तो आई एक्चुअली लाइक द 76 मोर देन द 100, क्योंकि व्हेन ही इज फ्लुएंट वी नो व्हाट ही कैन डू। उसके बाद मतलब वो एक बार वो जोन में आ जाता है तो वी नो दैट ही विल चर्न आउट रन्स फॉर फन। द 79 वाज मोर इम्प्रेसिव बिकॉज सड़ा हुआ पिच था, डेड पिच था वो प्रॉपर। और तो टर्न भी उसमें था, बहुत टर्न हाँ, था उधर। और वो जब आया तब पिच घूमने लग गया था, पहला 2-3 बॉल ही फट के हाथ में आ गए थे कि भाई ये क्या, ये तो भाई ये लोग बैट आई कर थिंक रहा था उसका तो। ड्रॉप हुआ था राइट, एक दो ड्रॉप हुए राइट, हाँ कि नहीं 70 हुआ? वाले में हुआ, 70 वाले इनिंग्स में 40 पे एक बार, फिर 76 आउट होने से पहले लास्ट ओवर में ही हुआ था एक बार, 40 पे कुछ तो हुआ था। बट वही वो थोड़ा जब नसीब जब चमकने लगता है, लास्ट ईयर ऐसा अजीबोगरीब तरीके से आउट हो रहा था, थोड़ा बैलेंस हो गया उसको। मेरे को तो पसंद आया कि क्या बोलते हैं, गिव अप नहीं किया वो, मतलब कभी भी ऐसा देख सकता था कि गंदा शॉट ट्राई करे या डाउन द ग्राउंड आके मारने को ट्राई करे, और कोई थोड़ा ब्लेम नहीं थोड़ा करता उसको। अग्रेसिव होता तो आई वुड हैव लाइक टू हैव हम्म। सीन दैट, बिकॉज था उधर स्कोप नहीं एग्रेसिव बट होने का। मेरे हिसाब से देख, जब यशस्वी जायसवाल जैसा बैटर जो क्या बोलते हैं नेचुरली बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, वो अपने 100 के बाद भी उसको रन्स मुश्किल हो रहा है। और उसका फर्क है ना, उसका डेब्यू है, एंड हियर विराट कोहली इज सेइंग टू द बॉलर हम्म। कम बोल टू मी, मैं तुम्हारा बाप हूँ टेक्निकली हाँ राइट, तो ही शुड स्टैम्प हिज हाँ, ऑथोरिटी, ठीक है। मतलब मेरे को वही अच्छा इनकॉन्सिक्वेंशियल लगा बट कि ही डिडंट डू दैट, ही टुक हिज टाइम कि मतलब आफ्टर 50 he could have done a little bit of more of that is मारा what ना I'm saying. लास्ट 50 के बाद, he scored the next 25 in his next 30-35 balls. He was फिर quicker यार, after his 50, but because वो till his 50 I know he was very हाँ slow, he was very slow, that तो I also agree, but वही कि and he was struggling as well, but the pitch हाँ, was also like that. मतलब मैं कैसा देख रहा हूँ कि देख, थ्रू आउट हिज करियर वो ऐसा बैट्समैन नहीं रहा है जिसको तू देख के बोलेगा कि ओ इसका गेम पूरा ऑलराउंड है, कि हर जगह पे ये, हिज गेम वाज ऑलवेज वेरी लिमिटेड। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि क्या बोलते हैं गेम ही नहीं था, मतलब 25,000 रन ऐसे ही नहीं हाँ, बना था। कंजर्वेटिव, क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल प्लेयर था वो। कन्वेंशनल प्लेयर, क्योंकि ही इज अ रिलक्टेंट स्वीपर, तो अगर पिच स्पिन होने लगता है तो यू सी द रोहित्स एंड द पंट्स, वो लोग स्वीप मार के दे क्या बोलते हैं एडिशनल स्कोरिंग ऑप्शंस देखते हैं। कोहली वो नहीं देखता, कोहली अपने मेथड से ही उसको जितना स्ट्रेंथ होता है वो लगता है, क्योंकि उसको ही वांट्स टू कीप हिज गेम सेन फॉर ऑल 3 फॉर्मेट्स ऑफ द गेम। तो उसके वजह से भी वो एक अप्रोच उसके साइड से भी हुआ रहेगा, और प्लस आई थिंक ही न्यू ही वाज प्लेइंग फॉर हिज टेस्ट करियर, not test career, but at least like uska spot was on the line. Regard no matter what we say, it was obvious कि he didn't have क्या बोलते हैं too many runs. Of course, he was getting some form in the back end of in the Australia series, in the WTC also he looked very good. But
But yeah, and of course, the 29th century was the icing on the cake. I thought वो एक तो चाहिए ही था in this series. And मतलब he is an extraordinary test batter. बट उसका वाइट बॉल रिकॉर्ड देख के ही बोल सकता है कि हाँ ये तो मतलब ऐसा हमें एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है वहां पे। टेस्ट में एक बार 50 अगर एवरेज क्लिक होता है ना तो मतलब यू नो कि यू हैव बीन कंसिस्टेंट फॉर लॉन्ग इनफ, और वो भी मतलब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो जाता है। सो इन दैट सेंस आई वांट हिज टेस्ट करियर टू गो लॉन्गर देन probably his white ball career. So I enjoyed both those knocks. दो दो तीन तीन बजे तक जागना थोड़ा सीन हुआ, but otherwise very good. Yeah. Well, what do you think of the one days? I'm looking. So Sky is in the one day squad, right? Yeah, I think so. Yeah. So I think that's the only thing I'm interested in. I But hope he converts and just let me check, because if I'm not wrong, Sanju Samson is in the ODI squad now. correct. So he will keep So we are potentially looking at Thursday से ही है ODI, वाह वो परसों ही 27 है। है. So we are potentially looking at series page, squads, ODI squad. Sky भी है, so we are potentially looking at Rohit, Gill, Kohli. Do you go with Sanju Samson at 4? No, Sky at 4, Sanju at 5. Hardik 6, Jadeja 7. Unadkat is in the ODI squad also, just so. Siraj will play. Umran Malik is also there. Shardul is there. Yuzi is there. I think the ODI squad picks itself, but we still lack a. क्या बोलते हैं? I think having Bumrah will change that. मतलब वो एक go to bowler बोलते हैं ना. In this bowling attack, Siraj मतलब he's good, but like वो एक go to X factor बोलते हैं ना bowling में. वो I हाँ कि think ये भी विकेट ले पाएगा वैसा नहीं है. apart from Bumrah, we probably lacked that. So I had hoped that Umran would like get more opportunities, but वो अभी लग नहीं रहा. या But ओडीआई में मेरे को लगता है नहीं कुछ खास है. But there is again stuff to lose if people. But even then, even Rohit is very settled in ODIs. Gill is in settled. ODIs, Kohli I is settled. don't think anyone has to worry No about question. their squad. Only thing is Sky के पास opportunity है. Sky एक and बड़ा Sanju 100. Samson also, I think. संजू सैमसन आई थिंक वो कितना भी मारेगा राहुल विल रिप्लेस हिम इज व्हाट आई फील बिकॉज सीनियरिटी भी है पर स्काई कैन रिप्लेस श्रेयस अय्यर इज व्हाट आई एम होपिंग. Yeah, even in terms of the bowling attack, it's like it's not too much. I think I would like to see more from Hardik, to be very honest, because क्या बोलते हैं IPL से कुछ हार्दिक के बारे में अपन थोड़ी बात कर सकते हैं भाई. हार्दिक तो सचिन तेंदुलकर के ऊपर आता है भाई पहले. नहीं, बट उसका तू ऑरा देखेगा ना तो ऐसे ही वो घूमता है कि भाई मैं जो करूंगा वो राइट है, मैं सॉर्ट हूँ अभी, मतलब हार्दिक अलग लेजेंड है भाई. कालिस ये सब लोग कुछ नहीं है. कपिल देव कौन है? हार्दिक पांड्या ऊपर है भाई सबसे. नहीं, बट इतना आई स्टिल कॉन्फिडेंस थिंक हार्दिक अभी दिखाता है ना. कपिल देव वर्ल्ड कप जीतने के बाद भी नहीं दिखा होगा. मैं तेरे को लिख के देता हूँ. नहीं, बट मतलब इफ ही कंटिन्यूज दैट आई एम completely okay with that, because इन हमारे वर्ल्ड कप स्क्वाड में I'm looking at three players who have to be our X factor. Like उनको हर मैच खेलना पड़ेगा sort of role. एक कोहली, because he plays at 3, he has to play that holding role if the players in and around him decide to like go all out attack करने का अगर decide करते हैं. One is Hardik, because Hardik and Jadeja, Hardik slash Jadeja, because depending on the pitches, our all-rounders will have to play a big role. And the third one is Bumrah, because he's someone who can have that 4 over spell where he can just completely turn the game on its head. We are playing I'll tell you my X Factor players: Gill, Sky, and hopefully Ravi Bishnoi. Bishnoi. I don't think he'll be in the 15 also. ना स्काई होने वाला है ना बिश्नोई होने वाला है ना वर्ल्ड कप होने वाला है. होगा होगा. I have high hopes. नहीं, हाँ होप आएंगे तो अपन मतलब और में आएंगे. स्पोर्ट्स में तो होप तो विदाउट तू होप बांग्लादेशी होता तो तू करता ना. तब भी होप वैसा ही है वो तो. बट द थिंग इज प्रैक्टिकली एक्स फैक्टर की कमी है अभी
ओडीआई टीम में exactly. स्काई को नहीं लेते हो। मैं वही if बॉलिंग में there's रवि बिश्नोई इसीलिए बोल रहा हूँ मैं, बिकॉज वो है एक्स फैक्टर थोड़ा बहुत। या इवन कुलदीप यादव एक्चुअली इज नॉट अ बैड ऑप्शन, बट बट कुलदीप रवि वही है बिश्नोई इज कि वो फास्ट, उसको मार नहीं सकते उतना हाँ, इजीली। और कभी पिटने लग गया तो वो एक डिफेंसिव रोने माइंडसेट लगता में है, चला जाता है। रोने वो लगता है। तो रेयर इवेंट था, बट वो एक डिफेंसिव माइंडसेट में चला जाता है। वो एक, बट पता नहीं यार, वी हैव टू गुड नहीं नहीं, स्पिनिंग उसका ऑप्शंस। उसका पूरा बॉडी लैंग्वेज दिखता है, ऐसा शोल्डर्स ड्रूप हो जाता है, इवन हाँ अभी भी एग्जैक्टली। में मार खाता है तो वही होता है इफ यू वो सी, बट स्पिनिंग ऑप्शंस में कुलदीप, यूजी, जडेजा, अक्षर, यू ऑलरेडी हैव फोर, सो आई डोंट सी। जडेजा और अक्षर, राइट, यू कांट प्ले बोथ। कुलदीप और यूजी, अनलेस द पिच इज लाइक आई मस्त वुड घूम रहा है। स्टिक टू वन देन, या तो यूजी हाँ को स्टिक करो या कुलदीप को स्टिक करो, बट आई या फील कि एग्जैक्टली। जडेजा इज अवे स्पिनिंग तो कुलदीप इज बेटर ऑप्शन, कि ही इज आल्सो, ही कैन हम्म। टर्न द बॉल मोर प्रोमिनेंटली अवे फ्रॉम द लेफ्ट हैंडर। हाँ मतलब वही, ये सीरीज थोड़ा इनकॉन्सिक्वेंशियल है बिकॉज इवन इफ रोहित कोहली स्कोर 0-0-0, आई डोंट थिंक देयर स्पॉट इज अंडर थ्रेट, करेक्ट एटलीस्ट फॉर करेक्ट। नाउ। सो दैट्स व्हाट इट्स लाइक, try different things, like the go all out approach, because even if you lose the series, there's the kya bolte hain, it won't matter too much. So if you want to try those things, you try it out here, but it also depends on the kind of pitches you get. So let's see, if you're getting spinning pitches, probably you try Umran, you give Siraj a break, you try the ones that haven't gotten a longer run, Sanju Samson ho ya kya bolte hain, Umran Malik with the extra pace, probably Yuzi and Kuldeep also at a time, to see how things work out for both of them. So yeah, and even if you win the series 2-0 or something, then you can give the senior players a rest. They don't need a rest, but just to try other players, sort of the Gaikwads or maybe someone like that. So yeah, ईशान किशन, आई वाज uh, वेरी इम्प्रेस्ड, मे बी गिव हिम अ शॉट एट ओपनिंग, रोहित को ही बैठा दो। hmm. Yeah, in one of the matches they could possibly try it, but obviously they have the T20 series also after that, where all the दैट इज senior इवन मोर players are rested. इनकॉन्सिक्वेंशियल, बट Uh, एनीवेज। but yeah, so not too much to talk about in this series. Probably you should do an Ashes discussion. There is so much to talk about there. तो Time भाई mila, so I think we should do that once. डन। But yeah, that's it for now.